Welcome students to Synopsis IS. I am Dr. Mohammad Zia and this is our post-independence history part and in this lecture जो हमने पिछले lecture में जहाँ पे हमने कहानी छोड़ी थी that Mrs. Gandhi became the first woman prime minister and rather the only prime minister till date of India. So here हम जो इस lecture में बात करेंगे we are going to talk about द इंदिरा गांधी ईयर्स एंड हम यहाँ पे बात करेंगे 1966 से 1977 तक की और फिर हम बात करेंगे 1980 से 84 एंड इन दिस आल्सो विल टॉक अबाउट द जनता गवर्नमेंट. So what are the main topics that we are going to see in this? The first thing is we'll talk about the food imports and currency devaluation. Then हम इसी में बात करेंगे formation of a separate Sikh state. How Punjab was separated. Then we are going to talk about the rise of Naxalite movement. After that, later on, after this, we'll talk about the Bangladesh crisis. Then the Pokhran tests, Pokhran 1. After that, in this video, we are going to talk about the JP movement, followed by emergency, and after emergency, we'll talk about the Punjab crisis. In between, after this emergency, one topic will take side by side, and that is the Janta government, and that would be a very brief topic as such. So ये major topics हैं जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. So let us start that, and we'll start with the first thing was that I have told you. जो हम बात करेंगे वो food imports और currency devaluation की. ये हुआ क्या एक्चुअली. सो हमने एक चीज देखी कि दिस वाज द टाइम पीरियड व्हेन if you see the last decade, we are in 1966, and by this last 6 years, what we have seen, massive population increase. बहुत ज़्यादा जो है एक इमीडिएट और एक बहुत जल्दी एक जंप आता है पॉपुलेशन में. उससे पहले क्या देखा, उससे पहले देखा 1965 और 1962 and 1965 wars, and these wars, as we have discussed, जो हमने इकोनॉमिक हिस्ट्री की जब हम प्लानिंग की बात कर रहे थे, वहाँ हमने देखा कि there were two successive droughts in 1965 and 1966. So in those सालों में there was continuous drought, and actually इन सब सारे फैक्टर्स को अगर एक साथ देखें तो द इंडियन इकोनॉमी वाज इन डीप डिस्ट्रेस एंड फेमाइन कंडीशंस जो है वो आ रही थी. इंडियाज डिसीजन, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे पास अभी भी हम फूड ग्रेन प्रोग्राम में सेल्फ सफिशिएंट नहीं हुए थे, और what we actually relied on food imports, and the PL 480 जो एड प्रोग्राम था यूएसए का, हम उसकी तरफ we have to rely on that only. और इसीलिए क्योंकि अब in economics you must have seen that whenever there is a devaluation of currency, ये जो है एक्सपोर्ट को enhance करता है. So what happened in March 1966? Mrs. Gandhi left for USA.
Now, before going there, what she has done, she has actually initiated the devaluation of currency. So यहाँ पे exports को increase करने के लिए हमने devaluation of currency किया. Though this devaluation of currency was highly controversial in itself because it failed actually to attract exports, imports and exports. I'm sorry, it failed to मतलब ये exports को भी नहीं बढ़ा पाया और जो foreign capital हमने सोचा था कि इस डिवैल्यूएशन से हम अचीव कर लेंगे, हम वो भी नहीं कर पाए. ऑन द अदर हैंड जो फूड डिस्पैच होना था यूएसए का, जो वीट आना था वहाँ से, वो भी मतलब एक तो वो टाइम से नहीं आ रहा था एंड इट वाज वेरी लेस. अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस गांधी मिसेस गांधी एक्चुअली लेफ्ट फॉर हर फर्स्ट फॉरेन टूर in March 1966 to USA. So क्योंकि अभी जो हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन की जो रिसर्च थी वही इन प्रोग्रेस थी एंड द न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी जो हमको इम्प्लीमेंट करनी थी उसमें भी टाइम था, और ये वो टाइम था जब हमें एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी. एंड व्हेन मिसेस गांधी रीच्ड यूएसए तो वहाँ के जो अखबार थे और यू नो उन्होंने एक्चुअली यही लिखा था, अ न्यू इंडियन लीडर कम्स बेगिंग. सो दिस वाज अ कंडीशन एंड actually, one paper of USDA, United States Department of Agriculture, it termed India as a destitute, or means there was nothing much what India could get out of uh, that visit. Mrs. Gandhi could not, or India was actually not so good. मतलब 1965 वॉर की अगर बात करें तो वहाँ भी यूएसए जो है इट वाज प्रो पाकिस्तान. इन द मीन वाइल वियतनाम वॉर चल रहा था और वियतनाम में जो अमेरिकन बॉम्बिंग थी उसको भी मिसेस गांधी ने काफ़ी हद तक क्रिटिसाइज किया था. ऑन एक्चुअली बिकॉज ऑफ दिस द यूएस डिस्पैच ऑफ वीट वाज वेरी लिटिल, बहुत कम वो भेज रहे थे. एंड दिस एक्चुअली चेंज. तो मिसेस गांधी जब यूएसए से लौटी तो शी वाज यूएसए से जब वो लौटी तो शी वाज वेरी मच डिसअपॉइंटेड, एंड दिस इज द पॉइंट वेयर शी चेंज्ड हर फॉरेन पॉलिसी एंड स्टार्टेड डिस्टेंसिंग हरसेल्फ फ्रॉम यूएसए. एंड इसी महीने में मार्च 1966 में नो डाउट इंडिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो बहुत ज़्यादा, दे वर लाइक एट डेंजरसली लो लेवल. सो इंडिया डिड अगेन सेम, फिर से एक डिवैल्यूएशन होता है. तब वन यूएस डॉलर वाज इक्वलेंट टू 4.76 रुपीस और इसको डिवैल्यूट कर दिया गया एंड नाउ द न्यू रेट, एक्सचेंज रेट वाज रुपीस 7.50. सो दिस एक्चुअली डिवैल्यूएशन जो है ये बहुत ज़्यादा, टारगेट यही था कि हम फॉरेन कैपिटल को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करें ताकि हम कुछ अपनी इमीडिएट इश्यूज, इमीडिएट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएं. बट दिस वाज अगेन not very much welcomed, especially by the left parties in India. Or again, this devaluation failed, and because it failed the objectives of increasing exports and attracting foreign capital, and to this was an age of era of unemployment in India. प्राइस राइज बहुत ज़्यादा था और इसका इम्पैक्ट ये था क्योंकि ट्रेड यूनियन, लेबर यूनियंस और कम्युनिज्म तब अच्छा खासा था इंडिया में. सो बंद, हड़ताल, ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा होने लगी एंड गवर्नमेंट सॉ दिस होल एज अ लॉ एंड ऑर्डर इशू. गवर्नमेंट को, भारत सरकार को लगा दैट दिस इज अ लॉ एंड ऑर्डर इशू एंड वी शुड टेक केयर ऑफ दैट. सो ज़्यादा कुछ यहाँ पे हुआ नहीं. It was overall that yes, we were facing huge food crisis and devaluation ने भी हमें कुछ as such help नहीं किया. So this was the food imports and um, the devaluation crisis. November 1966 में, now
going a bit forward, and in नवंबर 1966 की बात करें अब 1964-65 वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान में जो सिख कमांडर्स एंड जो सिख जवान्स हैं, दे हैड डिस्टिंग्विश्ड देमसेल्व्स विद देयर ब्रेवरी, और देयर वाज अ वेरी लॉन्ग डिमांड फॉर अ सेपरेट सिख स्टेट. उस टाइम तक पेप्सू था, दैट इज पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट्स यूनियन, और there was a recommendation to have threefold division of the existing states. तो उसमें इन्होंने ये किया, जो हरियाणवी डायलेक्ट है हिंदी का, उसके एरियाज को अलग किया, एरियाज विच आर इन द साउथ ऑफ पंजाब, एंड अ न्यू स्टेट ऑफ हरियाणा. फाइन. देन while the areas जो पेप्सू स्टेट जो था, उसके वो एरियाज जो पहाड़ी जबान बोलते थे, जो पहाड़ी डायलेक्ट बोलते थे, उनको मर्ज किया हिमाचल प्रदेश के साथ, जो उस पॉइंट पे यूटी था. एंड फाइनली जो पंजाब, एंड इट वाज लार्ज, सो इन दोनों को पेप्सू से हटाने के बाद जो बचता था, इट वाज पंजाब, एंड दिस पंजाब वाज द पंजाबी स्पीकिंग and the Sikh dominated state. And on 1st November 1966, Chandigarh was made the capital of the Punjab, and Haryana. It was also to be built, and actually ये लाहौर के जो पुराना पंजाब प्रोविंस था ब्रिटिश इंडिया का, उसकी कैपिटल लाहौर थी, और उसकी जगह वी हैड दिस प्लांट सिटी that was Chandigarh, and in order to make the capital, so this was so by now we had a new separate Sikh state. Rather, we have a Punjabi speaking state in India. Now, after resolving this issue, then again, if I go with a very brief, एक छोटा सा अगर कि 1967 में 4th जनरल इलेक्शंस होते हैं, और यहाँ पे जो है कांग्रेस वाज अगेन इन पावर, बट इट सफर्ड सर्टेन सेटबैक्स. तो लोकसभा में जो है वो they got the majority, and this time Mrs. Gandhi became again the prime minister and Morarji Desai as deputy prime minister, but majority जो थी बहुत ज़्यादा कम थी. स्पेशली इनको साउथ में बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ, जहाँ एक रीजनल पार्टी DMK which came to the power by in Tamil Nadu state by clear majority, and this was the very first time why DMK's winning in Tamil Nadu was important, क्योंकि this was the very first time कि किसी इंडिपेंडेंट इंडिया में किसी स्टेट में कोई नॉन कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बना रही थी अपने दम पे. बट this was a huge defection and all, and in 1967 May, Mrs. Gandhi came up with the 10-point program, and जिसमें उन्होंने बात की कि she talked about the social control of banks, general insurance का nationalization, abolition of privy purse, implementation of land reforms, जो business monopoly और economic power का concentration था उसे रोकना था, state trading and import and export, मतलब government will be involved in that, public distribution of food grains, provision of housing sites to the rural poor, and minimum wages for rural and industrial labor. लेकिन इस तरीके की जो policies थी जो थोड़ा सा restrictive in nature थी, it was not very much welcomed by the other members of the Congress party, or this led, actually this 10-point program was something which led to the split of Congress in 1969. उसमें नहीं जाते हैं. And the next important event or next important part in the history was the growth of the
Naxalite movement, the growth of the. Now what was this? अगर हम इसकी रूट देखें, इस नक्सल मूवमेंट की रूट देखें, तो कहीं ना कहीं जो एक जमानों से जो पीजेंट्स का एक डिसकंटेंट था, जो चला आ रहा था जमींदारी जमींदारी सिस्टम के दौर से, कहीं ना कहीं इसका रूट वहां पे है. ऑल्दो आज़ादी के बाद हमने लैंड रिफॉर्म्स किए और बहुत सीलिंग लगाई, बहुत सारे लैंड्स कॉन्फिस्केट किए गए, वो रिडिस्ट्रीब्यूट भी हुए, लेकिन स्टिल जो एक लार्ज सेक्शन ऑफ लैंडलेस पुअर था, उस तक ये जो चीज़ें हैं, ये इसका बेनिफिट, लैंड रिफॉर्म्स का बेनिफिट नहीं पहुंचा. अब ये जो पुअर था, इसने जो है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ठगा हुआ महसूस किया कि ठीक है, हमने आज़ादी की बात की, अंग्रेज़ों से हम लड़े, हमने उनके खिलाफ भी आवाज़ उठाई, और जब एक आज़ाद हिंदुस्तान की हम बात करते थे, जब हम एक आज़ाद हिंदुस्तान को सोचते थे, तो वहाँ हमें ये लगता था कि हमारे साथ किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. और अगर ईमानदारी से देखा जाए तो शायद आज भी भारत का जो लैंडलेस लेबर है, जो किसान है, जो काश्तकार है, वो अभी भी कहीं ना कहीं एक मिजरेबल सिचुएशन में है. द रिसेंट एग्जाम्पल ऑफ फार्मर्स प्रोटेस्ट, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, कितना सही कितना गलत, लेकिन अगर एक चीज सोचने वाली है कि अगर कानूनों को लेके लोग सड़क पे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई आवाज क्यों उठाता है? इसलिए नहीं कि उसे देश को रोकना है, इसलिए नहीं कि what they are getting, these farmers, they are sitting in severe winters. These farmers, ये जो हैं, ये अपना घर बार छोड़ के यहाँ बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? इसलिए नहीं कि उन्हें you know they want to disturb the government. No, I believe that yes, something is wrong. That is a different matter to discuss. खैर, 1964 में क्या होता है? Coming back to the Naxalite movement, how it started. Let us write that with red, क्योंकि the color of communists. So 1964 में जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट जो है, वो कम्युनिस्ट पार्टी से अलग होती है, क्योंकि सीपीआई से, सीपीआईएम जो है वो सीपीआई से अलग होती है, और कहती है कि वी नेवर वांटेड टू बी इन द पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स. और यू नो लेकिन हुआ उल्टा. दे एक्चुअली द सीपीआईएम वाज, कुछ ज़्यादा इनको वो नहीं मिला, तो 1967 में they actually participated in the general elections and formed the first non-Congress government in West Bengal. ठीक है. And Jyoti Basu was the home minister. So ये जो सीनियर लीडर्स ने डिसीजन लिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम में, that was very heavily criticized by the young cadres who accused कि ये जो है, ये फिर से parliamentary politics में बढ़ रहे हैं and they are betraying the revolution. So they said that time still the agrarian structure in our country is still feudal in nature. और ये क्या करते हैं, यहाँ से एक मूवमेंट की शुरुआत होती है which is known as liberated Kisan areas. On 24th May 1967, village Naxalbari in Darjeeling, West Bengal, जो सीपीआईएम लीडर थे, उनके तीन इंपॉर्टेंट, जो सीपीआईएम के तीन मेजर लीडर्स, चारू मजूमदार, कानू सान्याल एंड जंगल संथाल, ये क्या करते हैं? ये इस चारू मजुमदार, ही वाज अ वेरी कैरिस्मेटिक लीडर, और लेटर ऑन ये ही बिकेम द आइडियोलॉजिकल फादर ऑफ नक्सलिज्म इन इंडिया. दे स्टार्टेड एन आर्म्ड पीजेंट अपराइजिंग in the Naxalbari village of Darjeeling.
अब पीजेंट्स अटैक द लैंडलॉर्ड्स जो भी उस विलेज को कंट्रोल कर रहे थे, और ये इन्होंने क्या किया, जितने लैंडलॉर्ड्स थे उनको सबको अटैक किया, उनकी सारी प्रॉपर्टी अपने कब्जे में ली, एंड दे एस्टेब्लिश्ड अ लिबरेटेड किसान एरिया इन दैट विलेज. द मूवमेंट ये जो है ये धीरे धीरे जो है फैलता गया एडजॉइनिंग जो भी विलेजेस थे, और एट द सेम टाइम कहा यह जाता है कि इसको सपोर्ट मिला कम्युनिस्ट पार्टी चाइना से, एंड इट सून यू नो बिकेम दी मतलब इंटरनेशनल इसका एक नेचर हो गया, और यहाँ ही से नक्सलिज्म जो है एक नया वर्ड और नक्सलाइट वर्ड जो है ये आया. सीपीआईएम जो पॉलिटिकल जो उनका पार्लियामेंट्री बॉडी है, जैसे वो पॉलिट ब्यूरो कहते हैं, तो पॉलिट ब्यूरो ने इमीडिएटली एक मीटिंग कॉल की, एंड दे सेड दैट दिस वायलेंट दे कंडेम्ड द वायलेंस, और चारू मजुमदार और उनके फॉलोअर्स ने कहा कि वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट यू, अगर आपने अपना ये वापस नहीं लिया. तो उन्होंने कहा ठीक है. व्हाट दे डिड, they formed a separate party that came to be known as CPI-ML, Marxist Leninist. CPI-ML, that is Marxist Leninist, and this under the leadership of Charu Majumdar. Or the foundation day of the party was declared as 22nd April, क्योंकि that was the birthday of Lenin. और एक बहुत ज़्यादा So this CPIML actually marked the beginning of Naxalite political movement. अब तक Naxalite ने क्या किया था, उन्होंने सिर्फ जो है एक गांव से शुरुआत हुई, और अब ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट बन गया. 1970s को चारू मजुमदार ने कहा कि the decade of 1970s is the decade of liberation, and in the years of 1970-71 there was a huge rise in the Naxalite activity throughout the country, and their target was police, और उनको उन्होंने और जो दूसरे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट थे उनको टारगेट किया, एंड they had their so this was their political wing. उन्होंने 1971 में CPIML ने violent potential armed wing बनाई, and it was known as PLA, People's Liberation Army. So अब कुछ तो सरकार को भी करना था, इतना ज़्यादा जब लिबरेशन आर्मी देश के अंदर बन गई है, और ये बहुत ज़्यादा. So 1971 में there was an operation which was known as Operation Steeplechase. In 1971 में Operation Steeplechase, and it was a joint operation of Army, CRPF and police, और जो strong नक्सलाइट होल्डिंग एरियाज थे वहाँ पे इन्होंने एक तरीके से जो है वो बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि एक मूवमेंट चलाया, एक ऑपरेशन किया, एंड दिस मेजॉरिटी ऑफ द नक्सलाइट टॉप लीडर्स इधर दे वर किल्ड और दे वर अरेस्टेड. चारू मजुमदार को भी पकड़ लिया गया, और he died in 1972 in police custody. But this was not the end of the movement. Actually ये movement दोबारा reappear होता है, and if I take you to just ahead in this, we take a leap forward. तो अप्रैल 1980 में चलते हैं. अप्रैल 1980 में there was a leader released Naxalite था, and his name just a moment. So we are in April 1980 में there was a released Naxalite leader, and his name was Kondapalli Siddharamaiah. और he again formed a new party. अब इसने भी एक न्यू पार्टी, इन्होंने भी एक न्यू पार्टी बना दी, and that party was CPI ML
and PW. That was PWG. So this was the party that was formed by Kondapalli Siddharamaiah. That is Communist Party of India, Marxist-Leninist, and this PWG was the People's War Group, and this marked the beginning of the second phase of Naxalism in India. और you know they had a very lethal action plan. मतलब वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करते थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को किडनैप कर लेते थे, एंड इट इज सेड एज पर द डॉक्यूमेंट्स ऑफ Ministry of Home Affairs कि they had their links with LTTE, the Liberation Tigers of Tamilalam, of Sri Lanka, and they acquired like AK-47 जैसी armaments और लैंड माइंस जो हैं, इस तरीके की टेक्निक्स उन्होंने सीखी. और दिसंबर 2000 में, बिकॉज आई एम टेलिंग यू द होल नक्सलाइट मूवमेंट, December 2000 में they again it is considered as the third phase, and this was like the a new formation. एक नया इनकी फिर से मीटिंग होती है PWG की, पीपल्स वॉर्स ग्रुप की, और they form a new army which was known as PLGA, that is People's Liberation Guerrilla Army. And you know they had in 2000 they said that by 2003 we will will throw away the government of India. In 2003 उन्होंने एक attempt भी किया था. They targeted the they made an attempt to kill Chandrababu Naidu, who was then Chief Minister of Andhra Pradesh, and later on this PWG was declared as a terrorist organization under POTA, and it was जब उनके ऊपर बैन लग गया तो वो CPI माओइस्ट के साथ मर्ज हो गए. एंड अभी जो है दे एंड दिस CPIM मींस CPI माओइस्ट जो है ये जो माओ की आइडियोलॉजी है, दैट इट्स अ डॉक्ट्रिन दैट कैप्चर की armed insurgency, mass mobilization, and strategic alliance. These are the three doctrines on which this whole movement rests on. खैर 2009 में छत्तीसगढ़ के में 2010 में I think 74 CRPF, if you remember, jawans, they were killed. The bus was and this was the biggest ever attack, most lethal attack on security forces in India by the Naxalites. And तब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था that this is the gravest threat to our security of our country is Naxalism. और then 2009 में, क्योंकि ये actually this attack on the CRPF bus, I remember that, a bus which is having more than 80 jawans, वो जो है अगर 100 फीट पीछे चले जाए और एक करीब 100 मीटर पीछे चले जाए और एक करीब 40-50 फीट रेडियस का एक लैंडमाइन जो है वो लगाया गया था, एंड दिस वाज मोस्ट लीथल वन. सो एक्चुअली इनका जो नक्सलाइट का इम्पैक्ट रीजन है, इट इज नोन एज रेड कॉरिडोर. एंड ये जो रेड कॉरिडोर है, इट इज अफेक्टिंग रफली 90 districts of our country, more than 12 states. So नेपाल बॉर्डर से लेके केरला तक यहाँ पे ये रेड कॉरिडोर है. इन जनरल ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये ट्राइबल पॉपुलेशन जो है, शेड्यूल कास्ट और अदर वर्नरेबल जो ग्रुप्स हैं, वो जो डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये वो हैं. एंड एज पर Ministry of Home Affairs, I'm quoting them, that CPI Maoist is a major left-wing extremist outfit responsible for majority of incidents of violence and killing of civilians and security forces, and has been included in the schedule of terrorist organization and all organizations that are under UAPA, that is Unlawful Activities Prevention Act. So this is about Naxalism in India. एक और छोटा सा movement जो है against this Naxalism which was started
in Chhattisgarh it was known as Salwa Judum. एंड ये भी एक नए तरीके का एक आइडियोलॉजी थी ऑफ दिस सलवा जुडूम एंड इसमें एक्चुअली द मेन लीडर ऑफ दिस मूवमेंट was this was actually founded by Mahendra Karma in 2005. He was a very prominent leader and जो there was a tribal backlash between the Maoist against the forest officials और जो land distribution को लेके and so forest का कुछ land जो है वो distribute होना था tribals के बीच but unfortunately thanks to the corruption in our country जो village head और मुखिया थी उन्हीं के पास गए काफी tribals के पास पहुंचा नहीं so obviously their mass mobilization idea of Naxalites it helped and they challenge सलवा जुडूम की शुरुआत यहीं से होती जब सारे विलेज हेड्स और उनको जो है अटैक होने लगा सो महेंद्र कर्मा वाज अ कांग्रेस लीडर इन छत्तीसगढ़ एंड ही एक्चुअली इट वाज बेसिकली अ मूवमेंट जिसका मतलब था पीस मार्च और प्यूरिफिकेशन हंट लेकिन इसको गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से कैपिटलाइज किया एंड मिलिट्री जो एक्स नक्सलाइट्स थे दे वर गिवन द सपोर्ट और ये सलवा जुडूम जो है एज इट इमर्ज्ड एज अ सॉल्यूशन आर्म रेजिस्टेंस बाय द ट्राइबल कम्युनिटी अगेंस्ट द माओइस्ट सो बेसिकली सलवा जुडूम जो एक पीस मार्च के नाम पे शुरू हुआ था लेटर ऑन इसमें विद द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट जो एक्स नक्सलाइट्स थे जो सरेंडर्ड नक्सलाइट्स थे उन सबको इसमें इंक्लूड किया गया नाउ द ट्राइबल वाज फाइटिंग अगेंस्ट the Naxalites, but this actually was literally the bloodbath situation, especially in the southern parts of Bastar, the southern parts of Chhattisgarh, and in 2013, May 2013, there was a severe attack on the convoy of Congress party in Chhattisgarh, and I think majority Mahendra Karma and majority of other leaders they were killed in that. So last उसके बाद बहुत severe operations हुआ and right if we talk right now the this Naxalite movement is quite under control in India, but still it is there. So this was about the Naxalite movement. The next part of this video where we are going to discuss about the Bangladesh crisis after the 5th general elections, and then we'll talk about the Shimla Declaration and we'll complete this Indira Gandhi's time period in the next. So till then, have a great time. Stay safe, stay healthy. Thank you so much.